Assalamu alaikum. This is Farah and I am with you for another episode of the North Pulse. Today, we are going to start with something which happened this week about Syria, and it's a toppling of 55 years old, regime of one family. So, we have a guest from Syria who has been living here in Canada for some time, and we would like to know how he feels about this, big event in Syria and what is the way forward. So, welcome, Tawfik Alwan Sahab. How are you Thank doing you. today? Very well, thank you. Never been better in Okay. the past. Congratulations. I believe it's a big news for Syrian friends, and we congratulate you for finally something which has happened over there. And would you please share your journey throughout this process and how do you feel about it today? Yeah, thank you so much. Mixed feelings, definitely. There's ecstasy about it. Like a friend of mine mentioned, like we are cautiously ecstasy, happy and hopeful. Mhm. Um I was born in Syria, but I moved to out of Syria with my father um, when I was 6 years old, Okay. grew up in diaspora. Um, Although I've been visiting Syria once in a while, a family been visiting there, but it's never been the feel of safety is not something is something that we did not taste. So it's Have you ever traveled back to your country sometimes? last time I've been in Syria was September 2010. So Oh, before any 2010. Okay. yes. Long time ago. So your Exactly. family lives there? My extended family lives there, so my uncles, cousins, Hmm. and, they still live there. We have our house. My birth house is still there. Right. And Uh, was there a reason that you were not traveling back and visiting your family for this long? well, basically, my father left the country back in 1978. He was a teacher, a math teacher, and he was like loved among his uh, students. And he was under pressure, so he left the country, and he was again tipped off not to get back. So Hmm. even though when I mean he never been able to go back. For me, I went back and forth a few times during my university studies and after that and after being working, but we were not able to kind of establish life there. Right. Yeah, I remember I have a good friend in the who is teaching in the University of Damascus over there, Mhm. and he has never been able to get out of the country. So it Yeah. looks like somebody who is outside, they stay outside forever, and somebody who is in there, Or they or can't or leave, those right? or those who are outside, if they come back, they would go inside, really. I Right. mean, Yeah. Okay. So, like we live it. yeah. So I'm just curious because I know that Bashar al-Assad, he was not he was not in the pipeline to become the ruler, but he had to because of the death of the father and then the older brother. It Correct. seems to me that he could have been a different person, maybe a passionate person, compassionate with people as well, because he was becoming a doctor, eye specialist, or something. Yeah. That's what I learned. So I'm wondering why he was as strict or as bad ruler as his father was. Like, young people normally they think differently or act differently. Why he was not able to respond to the needs of Syrians in a different way? Well, I mean, I'm not in a position to really analyze what he's been through. We were hopeful Right. that, I mean, we were as hopeful as you mentioned of like he's been.
educated, and he's been was studying medicine. He was in the UK. He came Yeah. back after this sudden death of his father. We were hopeful that he would kind of bring in some change, but never happens. Right. Maybe power corrupts. I mean, the whole Yeah. regime was built on not on very well founded democratic foundations. So Yeah. to maintain that position, you would get into this cruelty to Right. the Yeah. yes. 6 million people fled the country, so that's not small thing. I learned that 44,000 came to Canada in 2015, or Yeah. So, okay. So I feel like you mentioned that you are happy, but cautiously happy. Why you are cautiously happy? Well, Why I you are mean, not? well, basically there's a change of you have a continuously prevalent system that's been there for over 50 years. Now, changing that and moving to another, there's a growing pain of a change that you will visit. All revolutions, all changes in systems, you would have this period of uncertainty. The French Revolution took many years until it came to settlement. The American Civil War took also over 6 years to do that. So there is an expectation. You would never know how things would react, different people, but we are hopeful. I mean, uh, just to share few of the feelings, mixed feelings that we're having. I mean, for the very first time, I discovered that I shouldn't be suppress my feeling, my homesickness, That's and big one. would Yeah. be able to believe that I can go freely and visit my home city and maybe decide to live there or uh, come back and freely move back and forth. This feeling never happened. I mean, just like you would have people who would. My father left, as I said, in 1978. He passed away in 2010. Hmm. From the moment he left the country until he passed away, every single day, every time he would hear something or see something about Syria, he would cry. He loved his country dearly. He loved his family dearly. Yet again, he did not dare to call them, so Yeah. he would not cause them any trouble. And when by meaning trouble is not like you're seeing what's coming up in the news. It's Right. horror. It's Yeah. unimaginable. Exactly. And I learned now it's in the news that the interim prime minister, he's encouraging, Syrians who are living abroad or who fled to other countries, come back to your own country. Are you thinking to do that or You would never not? know. I mean, we're hopeful. We have a country to build and rebuild. There's a Yeah. lot of need. There's a lot Yeah. of requirement, but also there would be a lot of challenges. And when I came to Canada, I really left. I used to live in another country. I had a very handsomely paid job. I had a very luxurious life. I used to live. I left that and came to Canada, and you're an immigrant, and you know Yeah. Yeah, how exactly. We immigrants all would go are. through Yeah. here, going right from the bottom point and try to climb the ladder. And sometimes you never claim what you would have to be able to do that. Yeah. And all this because I did not want my children to have the same pain of being feeling of being countryless or Right. in Oh, one yeah. point and being happy Yeah. in We the. all need to have a foundation where we belong to, and then we expand So you need through to that build on that. place. Yeah. So now, I mean, just like it's great. We're having that. Never say never. You can always see um,
we're hopeful. It would be great to be closer to our loved ones. Right. We'll see. Yeah. So my friend Ayub might have a question for you. Yeah, I have two questions. Sure. One is related, both are related to your country. The first thing, because I lived my life in Saudi Arabia, Hmm. and there are many Syrians, Yeah. and they were my friend and they are my friend still. So they always tell me about Syria, that it is a great agricultural country. Yep. So how do you see the agriculture development there? And number two, it can be an industrial country also. Yeah. So how you look at it? And the third uh, question is about the security. Do you think that you will be having security, general security, so you can continue doing all your developments as planned? Yeah. So to the first question, Syria is not only just a good agricultural place. Syria was the cradle of a lot of civilizations. Damascus is the oldest continuously inhabited city or capital city, actually, in history. Damascus, through different eras of history, has ruled the world. The world was ruled from Damascus. I'm not from Damascus. I'm from Homs, which is a city north of Damascus. But like Syria, and Syrians are known to be merchants, known to be agricultural people, known to be industrials. Aleppo is a very industrial city as well. I, you know, from being geographically well positioned between three, or at a junction between three different continents, with the nature of Syrian people historically being well educated, well entrenched in culture and history. They have this nature of being merchants. And because of the repellent nature, political nature of of the past era, many Syrians have, scattered around the world. So you'd have the states, you'd have, I've read a news. I think it was in Deutsche Welle that German authorities now are concerned because for the sustainability of the German health care system, because there are so many. There are over 6,000 specialized, highly specialized Syrian doctors who live in Germany, and they might, go back to Syria. Oh, yeah. So the same thing in the States, the same thing in Canada, same thing in other countries in Europe, same thing in Saudi Arabia or in others. All these would come. That's the largest nature. That's the greatest natural resource actually for Syria. So What do you mean by natural resource? These people are earthbound Human people. resources, Human Human resource. resource, Yeah. but it's naturally grown. They are like Talented people, no doubt about talented it. people and very well attached to their own culture and their own country. So Land, Yeah. many yes. would They love to love come it. back. Yeah. Now, to the Okay. other question is, would there be safety to sustain that? Time will tell. Again, just like, we've been programmed not to be hopeful, unfortunately, due to the past era. I We've see. been Yeah. taught not to hold a lot of hopes, to be over extra cautious, but at the same time, we cannot live without hope. And we are hopeful that, what Syrians went through have taught them how to be more resilient and more Yeah. tolerant to each other and work together. So, and instability is caused by hate, and hate is grown by injustice. Yeah. I So know. if you have a just base
where everyone is safe and Yeah. you I feel cannot fairly. imagine like you lived a life not seeing any other government except the Syrian, Assad regime, right? Yeah. Al-Bashar's regime only. That's what you are aware of somehow, so definitely it's difficult to be hopeful. And then you have Israel on your border, and who have already, according to the news, they have seized the demilitarized zone in the Syrian region. Like there Yeah. is one area which was controlled by Syria, but probably it's nobody's land or something like that, and they are controlling that. So these kinds of things are also Yeah. worrisome somehow, right? So yeah, of course. I mean, these are worrying points that we hope by time they're gonna resolved one Yeah, way or another. What Syrians are looking for now is just to stabilize yeah, and for kind sure. of like make sure that all of them they are coming together, they can work out their problems, and I'm 100% sure that they are able. Syrian people are able to come together and sort out their problems, Yeah, and there is no issues. I mean, there in Syria there's no issue other than that regime. I mean, exactly. Yeah, it's funny. Funny is it's like in many countries, and usually it's the minorities being suppressed, but here the majority was suppressed majority was by a suppressed. very Yeah, small minority or yeah, a very small portion or a family or a group yeah. from a small minority or a minority within the country. So That's the highest form of suppression, basically. yeah, We are hopeful and we pray that everything goes well with Syria and there is less negative engagement from the world. If there is any, it has to be a positive engagement with Syria so they are able to build their country. It's not an absolutely. easy task, but I hope that they have all the capabilities. Definitely they Absolutely. have the capabilities, and if there is positive engagement with them, it will be helpful for them to build themselves. So Absolutely. all the best to you and Thank you. your country. If I might And say, if I might say one last word, and just like for my fellow please say. Canadians, you will find a neighbor, a Syrian neighbor, or a friend or a colleague or someone, just like don't be fearful of going and asking them about if you want to learn anything, if you want to ask anything, don't be fearful of that. Canada has been known of as one of the most helping nation globally, and a lot. I mean, currently the Syrian people need the what they need is the help of stabilizing themselves in development, healthcare, Definitely. education, Yes. economy. Yeah. They need a lot of help. Canada can do a lot. Canadians can do a lot, and they are very welcome in that. And you have a lot of Canadian Syrians who can facilitate and help the development of that. Thank you. Right. Wonderful. Thank you so much for being on this show and sharing your story and your experience with Syria and your excitement as well. Cautious but excitement, right? These are Thank you. exciting times whenever there is a change and there is such a big change, and definitely good times are ahead. That's what And we if hope. you feel sometime in future or near future to update us, Yeah. Yeah, contact please Well, I us. reach mean, out to us. Thank you. Farah is a dear friend, and Yeah. she's been great Oh also yes. and gracious Thank you. in calling that. So I'm happy all the time to answer any questions in the Sure. future as well. Thank Thank you so you. much. Thank you so Appreciate much. it. Yeah. Thank you. कि नाजरीन, तो अभी आपने सीरिया के बारे में कुछ जाना या जो हमने डिस्कस किया. अभी हम ब्रेक पे चलते हैं. जब ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं.
HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई, जराइम में बेहद इजाफा, घरों की आसमान को छूती कीमतें, स्कूल में छोटे बच्चों की फौहश सेक्स एजुकेशन। ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या दोनों? इन जैसे मसाइल के हल के लिए 2020 में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राणा ने सेंट्रिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी। सेंट्रिस्ट पार्टी हम सबकी आवाज है। आप भी सेंट्रिस्ट पार्टी में शामिल होकर हमारा साथ दें। मजीद तफसीलात के लिए centristcanada.ca विजिट करें। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, bahut ala chai, ala churro chai. Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कोई कड़क चाय थी। Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ओपनर था 2024 का for Desi Bikers of Canada. Chai Social sponsor. We want to thank the team of Chai Social. Absolutely great experience, great kadak chai. Best kadak chai in town. Absolutely. Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। वेलकम बैक। तो अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में हम थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं जो आज की करंट न्यूज़ है कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ है 50 बेसिस पॉइंट्स और जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन 3.25% हो गया है। तो इसका क्या इम्पैक्ट है। तो हमारे साथ स्टूडियोज में तो आपको पता है कि अयूब वली साहब मौजूद हैं और ऑनलाइन स्काइप पे हमें ज्वाइन करने वाले हैं दानिश, हसन, मलिक साहब। तो उन्हीं से हम बात का आगाज करते हैं। अब आप बताएं कि हाउ हैप्पी आर यू इन्वेस्टर, आर यू हैप्पी आफ्टर दिस मॉर्निंग्स न्यूज़ के ये जो कम हो गया है इंटरेस्ट रेट, तो इसका मार्केट पे अच्छा इम्पैक्ट होगा क्या? कैसे देख रहे हैं इसको? डेफिनेटली जो न्यूज़ है वो तो बहुत बड़ी है क्योंकि 25 पॉइंट्स डिक्रीज होने के बाद जब 50 बेसिक पॉइंट्स अचानक से डिक्रीज हुआ है और ओवरऑल इंटरेस्ट रेट जो है वो 3.25 पर पहुंच गया। तो दैट इज़ अ बिग न्यूज़ फॉर द इन्वेस्टर्स, खासतौर पे वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी बाय की हुई है। उनकी प्रॉपर्टी की कीमतें जो हैं, पर आपने देखा होगा कि वक्त के साथ साथ कोविड जैसे ही गुजरा तो प्रॉपर्टीज की जो प्राइसेस थी वो हाइक की, प्रॉपर्टी की प्राइसेस हाइक इसलिए की कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बिल्कुल उन्होंने फॉल करके 0.025 तक ले आए थे और उसके बाद 0.99%, फिर 3 और 4 और 7, 8% तक चला गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अब जो
है ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि वो लोग जो इंतज़ार कर रहे थे कि उन्होंने प्रॉपर्टीज़ को ग्रैब करना है, प्रॉपर्टीज़ को बाय करना है, वो लोग जो है अब बाहर निकलेंगे। जो रियल एस्टेट मार्केट है वो दोबारा से खड़ी होना शुरू होगी अपने पाँव के ऊपर। इसी तरह जो नई कॉन्डो बिल्डिंग्स अनाउंस होनी थी, जो नए प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट्स अनाउंस होने थे, वो भी दैट इज द राइट टाइम फॉर देम टू। दे वर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम के इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए, ताकि हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो पोटेंशियल क्लाइंट है, जो B2B है या B2 बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर है, उनके लिए जो है वो आसानी पैदा हो। जब लोग बैंक्स के पास जाएंगे प्री अप्रूवल्स लेने के लिए, तो बैंक्स को भी अब बड़ी आसानी हो जानी है। इवन अब जो खास तौर पे वो तबका जो कि लो इनकम वाला था या मिडिल क्लास फैमिलीज जो थी विद इन कैनेडा, उनको जो है बड़ी आसानी हो जानी है। अब घर, प्रॉपर्टीज, कॉन्डोज, अगर किसी ने कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए भी, क्योंकि कमर्शियल इंटरेस्ट रेट जो है वो भी इम्पैक्ट हुआ, वो भी नीचे आया जी। अच्छा, तो मैं अयूब साहब से फिर इसके बारे में पूछती हूँ कि मेरा तो ये ख्याल है कि जो बायर है, जो घर लेता है, वो बेचारा तो इक्वली वर्स्ट ऑफ सिचुएशन में रहता है। क्यों? क्योंकि उसको तो पैसे देने हैं, या वो बैंक को देगा, बैंक को नहीं देगा तो वो जो सेलर है उसको दे देगा। क्योंकि अब आपको पता ही है कि जैसे इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, प्राइसेस हाउसेस की और बढ़ जाएंगी। जब वो बढ़ेंगी तो एट द एंड ऑफ द डे एक जो बायर है वो तो पे ही कर रहा होगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? फिर भी वो बेटर ऑफ होता है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है? देखिए, जब भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट आती है जी, और बोरोइंग्स के जो रेट हैं वो कम हो जाते हैं जी, तो ये एक तरीके से इंसेंटिव हो जाता है इन्वेस्टर के लिए जी, कि वो अपना पैसा लगाए। थोड़ी सी बोरोइंग्स होती है, जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो गया जी। अब इसमें दो किस्म की बोरोइंग होंगी। एक होगी टिपिकल जो उस पे होगी फिक्स्ड पे, और एक इंटरेस्ट रेट लोग लेंगे ऑन एक फिक्स्ड होती है, एक वेरिएबल जी। तो वेरिएबल वालों के लिए बहुत अच्छी होती है इन्वेस्टमेंट जी हाँ, अभी अगर किसी के पास वेरिएबल है तो उसका फायदा हो गया ना। हाँ, क्योंकि ये कम इंटरेस्ट रेट हुआ है तो जाहिर सी बात है वही सही है, गेन करेंगे। जो फिक्स्ड वाले हैं वो तो बेचारे फंसे हुए हैं जहाँ कहीं और वेरिएबल भी एकदम नहीं सबको मिल जाता। वेरिएबल के लिए भी क्वालिफाई करने के पैरामीटर्स हैं। जी जी, सही तो बात। ये एक अच्छा है। अच्छा, सही। अच्छा, इसको थोड़ा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में दानिश साहब अगर हम देखें तो ये तो कह रहे हैं जो क्या वजह हुई है कि उन्होंने इतना इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है, विच इज गुड, आई एम नॉट अपोजिंग इट, लेकिन मैं हैरान हो रही हूँ कि 2% है इन्फ्लेशन इस वक्त। तो इन्फ्लेशन भी जब कम है तो ये रिसेशनरी नहीं हो जाएगा फिर कि इन्फ्लेशन भी कम है, इंटरेस्ट रेट भी कम है? तो क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो मार्केट में जरा ज्यादा प्रोडक्शन आती है, ज्यादा सप्लाई होती है, ज्यादा मार्केट एक्टिवेट होती है। तो फराह साहिबा, देखिए ये कि ओवर द पैसेज ऑफ टाइम जो गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशंस दी हैं, जो उन्होंने टेम्परेरी पब्लिक पॉलिसीज दी थी, उससे पहले जो उन्होंने बिजनेस इमिग्रेशन को ओपन किया हुआ था, इसके अलावा जितनी भी इमिग्रेशन स्ट्रीम्स थी, देखिए उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस पूरी मार्केट के ऊपर। पहले जो था आपका इन्वेस्टर जो है वो आ सकता था, अब जो है वो इन्वेस्टर पे भी पाबंदी लग गई है। 2027 तक उन्होंने इमिग्रेशन कैप कर दी है। जो पैसा कनाडा में आ रहा था या जो आना है, आपने देखा होगा कि शेरिडन कॉलेज को $12 मिलियन का नुकसान हुआ है एक महीने में। सो अब ये जो कमी है, ये जो गवर्नमेंट के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो उन्होंने किसी ना किसी तरीके से उसको पूरा करना है। अब जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट को नीचे किया तो डेफिनेटली लोग अपना पैसा निकालेंगे, अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। एक, जब आप घर बाय करते हैं, आप फेडरल टैक्सेस देते हैं, आप प्रोविंशियल टैक्सेस देते हैं। जब इतनी सारी चीजें गवर्नमेंट को जा रही होती हैं तो गवर्नमेंट को अब कहीं ना कहीं से तो अर्न करना ही है। ऑब्वियसली पहले जब फॉरेन इन्वेस्टर थे, फॉरेन इन्वेस्टर कनाडा आते थे, दे यूज्ड टू पे ह्यूज टैक्सेस, 30 से 35% टैक्सेस वो देते थे जब उन्होंने एक घर या कॉन्डो को ट्रांसफर कराना होता था। तो अब जब फॉरेन इन्वेस्टर्स पे ऑलरेडी पाबंदी लग गई है, सिर्फ इसलिए कि जो विद इन कनाडा लोग बैठे हुए हैं उनकी जो हाउसिंग की नीड्स हैं वो पूरी हो, और जो नया इमिग्रेंट आ रहा है उसकी हाउसिंग की नीड्स पूरी हो। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने इन्फ्लेशन के साथ साथ जो है अपना जो
इंटरेस्ट रेट था उसको रिड्यूस करती, ताकि जो इन्वेस्टर है वो खुलकर बाय सेल कर सकता। तो अब जो है आई गेस के इन्वेस्टर्स, बायर्स, उनके लिए और सेलर्स तीनों के लिए एक अच्छी मार्केट बन गई है। और बाकी जो आप बात कर रही थी कि लोगों की जेब से पैसा कैसे निकलेगा, ये वो पहले अगर एक बंदा 1 मिलियन के घर पे बिल फॉर एट एन एवरेज $5,000 जो है वो मॉर्गेज पे कर रहा था, तो वो ही अब 3250 पर आ जाएगी, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली लोगों की जो पॉकेट है वो इम्पैक्ट हुई है, उनका जो स्पेंडिंग पावर थी वो इंक्रीज हो जाएगी इससे, और जो लेंडिंग होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। वंडरफुल एनालिसिस, आई रियली लाइक दैट कि वो अभी रिसेंटली, ऑल्दो ऑन वन साइड वी डू से कि गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसीज हैं उस पर इम्पैक्ट नहीं होता और सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट डिसीजंस करता है, लेकिन डेफिनेटली इस डिसीजन से कि ये जो इतना इंटरेस्ट रेट को कम कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही बात कही कि लोग ज्यादा परचेज करेंगे, जब परचेज करेंगे तो टैक्सेस देंगे, तो गवर्नमेंट के पास जो बजट डेफिसिट का बहुत बड़ी कंसर्न है इस वक्त, स्पेशली ये जो उन्होंने जीएसटी वगैरह HST की छूट दी है 2 महीने के लिए, या $200 दे रहे हैं लोगों को, वो सारा जो है वो किसी हद तक उसको कवर करने की कैपेसिटी। इसमें एक और बड़ा इम्पैक्ट ये है कि अक्टूबर में वी आर गोइंग थ्रू अनदर इलेक्शंस, और हम एक बहुत बड़े इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और जो आने वाला इलेक्शन है उसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं पता कि कंजर्वेटिव विन कर रही है या लिबरल विन कर रही है, या एनडीपी इस दफा किसी भी गवर्नमेंट को बैसाखी देने की या सहारा देने की पोजीशन में होगी या नहीं होगी। एवरीथिंग इज वेरी वेरी अनक्लियर। हो सकता है कि लाइक अगर मैं एक लार्जर स्केल में देखूं तो आई नेवर सी के कंजर्वेटिव इज गोना विन द 1/3 मेजॉरिटी, ना ही मैं ये देख रहा हूँ कि लिबरल जो है वो 1/3 के करीब भी कहीं आ रही है, या एनडीपी जो है पॉलिटिकली कुछ आ रहा है। कोई ऐसी कोalition गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट बनने के चांसेस हैं, या फिर जैसे 2 पार्टीज के इलेक्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्शन अगर अक्टूबर में हम जा रहे हैं तो इट इज अ फेल इलेक्शन फॉर श्योर। उस इलेक्शन में कोई भी पार्टी जो है वो एट वन साइडेड वो गवर्नमेंट नहीं बना सकती। सो जो अपोजिशन पार्टीज हैं, हो सकता है इस दफा जो पार्टीज अपोजिशन में बन रही हैं वो 3 से 4 जो बड़ी पार्टीज हैं, हो सकता है वो सारी मिलकर जो है वो गवर्नमेंट बनाए, फिर दोबारा गवर्नमेंट में आ जाए। आई सी, ओके, दैट्स अ गुड पॉलिटिकल एनालिसिस आई वुड से। लेकिन अभी आपको क्या फ्यूचर में लग रहा है कि अभी फर्दर कुछ रिडक्शंस होंगी नेक्स्ट ईयर भी, अर्ली नेक्स्ट ईयर, या डाउन द रोड, या कैसे आप इसको कैसे फोरसी करते हैं? मैं ये क्वेश्चन दोनों से है। देखिए दानिश साहब आप ही बताएं पहले। ये जितने रिडक्शंस हैं और ये जितनी चीजें जा रही हैं, ये सारी की सारी पॉलिटिकल मूव्स हैं। फिलहाल के लिए इकोनॉमिक मूव तो है ही हैं, उसके साथ पॉलिटिकल मूव्स हैं। लिबरल जो है वो इस वक्त एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं खड़ी हुई, लेकिन उन्हें अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे आर गिविंग अवे फॉर नाउ। ये 1 साल या आप बोलें कि 10 महीने का अरसा उनके पास रह गया, दे आर गिविंग अवे। वो जीएसटी HST रिबेट्स रिबेट्स नहीं, ब्रेक्स दे रहे हैं। इनफैक्ट दे आर गिविंग 2 months GST HST ब्रेक, जिसका मतलब ये है कि दे आर trying to attain the loyalty of their voters, जिन्होंने उनको पास में वोट किया वो उनका वोट दोबारा लेना चाह रहे हैं। इसी के साथ साथ जब इंटरेस्ट रेट रिडक्शन है, एंड फॉर श्योर अगले 3-4 महीने में इस इंटरेस्ट रेट को ये कहीं 2.75 2.50 के आसपास लाएंगे। बिफोर द इलेक्शंस दे have to do that. Liberals के पास कोई चॉइस नहीं बच रही but to surrender in front of their own people. इमिग्रेशन को कैप लगाने का मतलब ये है कि अभी फर्दर आपने पिछले दिनों में नोटिस किया होगा कि जो सिटीजनशिप का टाइम पीरियड है, कैनेडियन सिटीजन बनने के लिए जब आप अप्लाई करते हैं उससे लेकर आपको जो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मिलता है उस तक का जो टाइम पीरियड है वो रिड्यूस करके 7 months कर दिया गया है। पहले यही टाइम पीरियड 14 months था। इट मींस के जितना भी नया इमिग्रेंट है उसकी जुबान पर एक ही चीज है, दे हैव टू वोट फॉर द लिबरल्स। क्यों? क्योंकि लिबरल्स इज द वन हु ब्रॉट देम इनटू कैनेडा। जितना रेफ्यूजी तबका है, प्रोटेक्टेड पर्सन जो कि पीआर बन के और अपनी सिटीजनशिप को अवेल कर रहे हैं, उनका टाइम पीरियड भी 7 months कर दिया गया उनकी सिटीजनशिप को अवेल करने का टाइम। सो इट मींस के वहां से भी वो अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। सो पॉलिटिकली दे आर प्लेइंग अ बिग मूव जो कि उनके वोट बैंक के लिए अच्छा है। तो उन्हें ये अभी करना ही है कि उन्होंने करंट इमिग्रेशन को 2027 तक कैप कर दिया, जिसका मतलब है कि अब जो उनके करंट सिटीजन्स रेजिडेंट्स हैं, असल में वो टारगेट सिटीजन्स और रेजिडेंट्स को नहीं, अपने वोटर्स को कर रहे हैं कि हमारा जो वोटर है हम उसको इतना बेनिफिट करें कि वो उसी सेम लॉयल्टी के साथ और खुश होकर दोबारा लिबरल को वोट देने आए। Okay, amazing analysis, I must say that. Very okay, good. Wonderful. Thank you so much for being on our show. मैंने आयुब साहब का भी पॉइंट लेना था, लेकिन मैं भी अगले हम सेशन में ये बात करेंगे, क्योंकि ये
कलर चेंज हो गए हैं लाइट्स के, इसका मतलब है कि हमें प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। तो दानिश साहब बहुत शुक्रिया, आप पता नहीं निकल गए हैं, आप हमारे साथ नहीं हैं अब। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। और इसी तरह अपनी फर्दर कन्वर्सेशंस को कंटिन्यू करेंगे। ये वन टाइम एजेंडास नहीं होते, कोई भी इकोनॉमिक एनालिसिस है, कोई भी पॉलिटिकल एनालिसिस है, उसकी डेवलपमेंट्स हर वीक हो रही होती हैं, तो इसलिए वो हम बार बार इन्हीं टॉपिक्स को ही डिस्कस कर रहे होंगे। तो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू नेक्स्ट वीक एज वेल। तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम।